Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, my dear friends. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. Yes, सर्वांना माझ्याकडून सुद्धा सर्वांना एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आषाढी एकादशी आणि ईदीच्या पण आज सर्वांना शुभेच्छा. येस, आज टायगर डे पण आहे. हा सर, पांडुरंगाला अशीच कृपा आहे, असंच आम्हाला ज्ञान मिळत राहू, याच्यापेक्षा खूप 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 फिशिंग करता यावं आणि तो पर्ल मिळावा हीच इच्छा. आणि तुमच्यासारखा सरांच्या नंतरचा टायगर भेटावा आम्हाला, असं ज्ञान भरभरून देणार हीच पांडुरंगाला इच्छा आहे. आणि असे पेशंट म्हणजे हील होत राहू, त्यांचा पेन, त्यांना हेल्दी लाईफ मिळावं. Dr. Vijayakar sir was the lion of homeopathy. येस येस. Okay, so today on the occasion of Ashadi Ekadashi, we will start the chapter coma. Yeah. So, what is coma? Unconsciousness. What is coma? So, coma or unconsciousness, it is a deep sleep. You know? So, coma is a deep state of prolonged loss of consciousness. It may be prolonged or it may be short. So, coma is a deep state of prolonged loss of consciousness in which patient cut contact with surroundings and cannot be awakened, fails to respond normally to painful stimuli, light, light or sound. Yes, so fail to respond normally to painful stimuli, to light or to sound. It can cause by traumatic head injury, stroke, brain tumor, or drug or alcohol intoxications, etc. Coma may even be caused by an underlying illness such as diabetes or an infection. So this is called coma or unconscious state of mind. तो किस किस ने कोमा के केसेस हैंडल किए, ट्रीट किए एंड क्योर किए? So first, tell me, anyone from our group who has treated the coma? Nobody. Okay. So after this learning, definitely you will treat the coma cases. तो आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है. इसके बाद ये एक दो दिन ये लेक्चर चलेगा कोमा का. उसके बाद हम इस पे लाइव केस भी देखेंगे. Yes. So this is called coma. Analysis of coma
sensitive people and timid people can go into coma. Yes, sensitive people and timid people can go into coma. The types of coma mostly acute and chronic. So acute coma, trauma either due to physical or mental injury, trauma due to biochemistry, structural brain injury or generalized brain dysfunction, trauma due to homeopathic medicines also. So wrong homeopathic medicines or partial homeopathic medicine can cause coma, comatose condition. For example, in diarrhea cases, particularly in the old age, if you treat the diarrhea, dysentery in old age patient, and that remedy, if the remedy is partial similimum, and that patient may go into dullness and afterward the unconscious state. So this is because of wrong homeopathic medicines. The chronic coma, chronic or permanent coma, it is a vegetative state, also known as persistent vegetative state or post-coma unresponsiveness is a disorder of consciousness in which patient with severe brain damage. So chronic कोमा में पेशेंट डीप कोमा में भी हो सकता है या फिर विजिटेटिव कोमा, विजिटेटिव लाइफ। तो विजिटेटिव स्टेट जो होती है, पेशेंट कॉन्शियस तो होगा लेकिन बॉडी का कोई भी पार्ट फंक्शन में नहीं आया, उसका सेंसेशन फंक्शन लॉस है अभी भी। ओनली पेशेंट कैन ओपन द आई, partially he can understand or understand your commands, but not fully conscious. This is called the vegetative state of mind. So these are two types. When an unconscious person enters your clinic or hospital, the first step to identify the cause of unconsciousness. Yes, अगर कोमा का पेशेंट, कोई कोमा का पेशेंट लेके हमारे पास आता है, तो हमारा फर्स्ट वर्क ये होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमारी ये होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये पर्सन कोमा में क्यों गया? द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। फर्स्ट, परफॉर्म अ जनरल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री चेक। सबसे पहले आप उसके जनरल पैरामीटर्स देखिए, देन you can take a deep history. Make sure the patient is an actual comatose state and is not in a lock-in state. Yes, वो actual coma condition में है या फिर lock-in state, कि only partial है या फिर only कि जैसे collapse condition है। Yes, इसमें बहुत से कंडीशंस होते हैं, कुछ पेशेंट हिस्टेरिकल होते हैं। सो एक्सपीरियंसिंग साइकोजेनिक unresponsiveness also. So patient with lock-in syndrome. So lock-in syndrome means it is a complex medical condition presenting quadriplegia, bulbar paralysis, and whose body sensory loss, where the body sensory loss due to damage in the brainstem. This is called the lock-in syndrome. Patient with voluntary movements of their eyes,
पेशेंट के आईज के मूवमेंट्स है बट बॉडी मूवमेंट्स कुछ भी नहीं है, दैट इज लॉक इन सिंड्रोम। वेयर एज पेशेंट विथ साइकोजेनिक कोमास, बहुत पेशेंट हिस्टेरिकल स्टेट में होते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में कैसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, पेशेंट को कैसे चेक करना कि it is real coma or only hysteria. So demonstrate active resistance to passive opening of the eyelids. तो रियल कोमा में पेशेंट है तो उसे आईज में नो मूवमेंट्स, नो एनी चेंज दिखेगा। और वही अगर आप हिस्टेरिकल पेशेंट्स में देखते हैं, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, उनमें दे शो दे आर इन coma, unconscious state, but when you see their eyes, just उसे टच करो तो वहां पे आपको eyelids के movements दिखेंगे। This is called the pseudocoma. So passive opening of eyelids with eyelids closing abruptly and completely when the lifted upper eyelid is released. So rather than slowly, asymmetrical and incompletely as seen in comas due to organic causes. Find the site of the brain that may be causing coma. Yes. तो ब्रेन के कौन से पार्ट अफेक्ट हुए जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में है। सो फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टेम, बैक ऑफ द ब्रेन, मोस्टली because of injury, because of any capillary artery, and assess the severity of the coma with the Glasgow coma scale. So ये जो Glasgow coma scale होता है जनरली हम देखते नहीं, लेकिन देखनी चाहिए कि पेशेंट कितने परसेंट कोमा में है, उसका जो स्केल कैलकुलेशन है वो कितना है। इट इज वेरी सिंपल, बट ये हम प्रैक्टिस में लाते नहीं, प्रैक्टिस करते नहीं इस चीज की। तो ग्लासगो कोमा स्केल, इट इज हैविंग 3 टाइप्स, आई ओपनिंग, देन वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो इन 3, इसमें ये 3 चीजें होती है जो देखनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है एंड कैलकुलेट। इसमें ग्रेडिंग होता है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, देन उससे स्कोर बनता है। सो जो आई ओपनिंग होता है, आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस, देन आई ओपनिंग टू साउंड, आई ओपनिंग टू प्रेशर एंड आई ओपनिंग टू नॉइस। तो अगर हम पेशेंट को आवाज देते हैं तो आई ओपनिंग है नहीं है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, एटसेट्रा। देन वर्बल रिस्पॉन्स में वर्बल रिस्पॉन्स पेशेंट का कैसा है, देन ओरिएंटेटेड, कंफ्यूज्ड, वर्ड्स, साउंड्स एंड नन। दिस इज द वर्बल रिस्पॉन्स। जैसे ही हम पेशेंट को आवाज देते हैं, कुछ पूछते हैं, तो पेशेंट अगर स्लाइटली कुछ आवाज निकालता है, जैसे कि एस और नो, इस तरह से वर्बल रिस्पॉन्स में ये ग्रेडिंग होता है। देन द मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स में ओबे कमांड्स, देन नॉट सॉरी normal flexion, abnormal flexion, extension and none, and the localizing. Yes, so this is the motor response.
हम जब पेशेंट को पिंच करते हैं तो पेशेंट के फ्लेक्शंस कैसे होते हैं, पेशेंट का क्या उसके अगेंस्ट रिएक्शन होता है, क्या पेशेंट एक्शन करता है। दिस इज द मोटर रिस्पॉन्स। तो इसमें ग्लासगो कोमा स्केल में 3 टाइप्स है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सो माइल्ड का जो स्केलिंग होता है वो 13 to 15 होता है, moderate का 9 to 12, and the severe coma, deep coma, 3 to 8. Only 3 to 8% patient is responding, and that may be involuntary, not voluntary. Yes. So this is the Glasgow coma scale. Then take complete detailed history or take blood work to see if the drugs were involved. Yes. So both bar, because of multiple drugs, higher antibiotics, steroids, मतलब एब्यूज मेडिसामेंट की वजह से पेशेंट कोमा में होता है। देन ये हमें फाइंड आउट करना है, रूल आउट करना है, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ मिलता है तो एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज ऑफ मेडिसामेंट, ये रूब्रिक बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। और इसमें लिमिटेड मेडिसिन है, नक्सोमिका, सल्फर, पल्सटिला, और इतने सडन फास्ट इन केसेस में रिजल्ट आता है, जैसे कि अगर बिकॉज ऑफ एनी मेडिसिन patient goes into coma, if that medicine is allopathic medicine, then noxomica, if the patient is chilly or irritable, angry, sometimes फास्ट रिजल्ट आता है। इसके केस मैंने देखा था, एक चिकनगुनिया का पेशेंट था जिसे नियर अबाउट 15 डेज तक इसी हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट हुई, और आफ्टर 15 डेज ही बिकम्स डल, एंड धीरे धीरे वो पेशेंट कोमा में गया। उसके बाद 3 दिन पेशेंट कोमा में था, एंड किसी भी ड्रग्स को, मेडिसिन को पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। देन द डॉक्टर told him कि no hope. Afterward, patient was discharged, and somebody came to me, and when I see that patient, very much angry, irritable, बार बार पेशेंट 1 minute internet, okay, so before coma state he was very much angry, irritable, he was continuously throwing temper tantrum on the attendants, doctors, the hospital staff, his relatives. तो वो एक पेशेंट के कोमा में जाने के पहले का सिम्टम बहुत प्रोमिनेंटली मुझे मिला था। देन ही वाज चिली, एंड उसमें ये 2 रूब्रिक डालने के बाद जो मेडिसिन आई, दैट वाज नक्सोमिका, और नक्सोमिका ओनली ऑन फोरहेड आई वाज अप्लाइड in 200 potency. Then the next day morning, he came out from coma. So that was my best experience for elements from abusement of medicine और मेडिसामेंट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे उसमें मिला था। सो ऐसे चिकनगुनिया जब आया था तो ऐसे बहुत से केसेस हुए थे,
जो पेशेंट कोमा में गए, कुछ पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रूमेटिक पेन्स या फिर वीकनेस बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन आए. यस. The seventh point, check for levels of serum glucose, calcium, sodium, potassium, magnesium, phosphate, urea, and creatine. Yes, these are also the complications of medicine. Mostly in coma cases, these uh, levels of this serum always be in low. So the serum glucose, calcium, mostly sodium, potassium goes down, and urea, creatinine, because of excess medicament, it become rise. So ये complications होते हैं, और ये इन पेशेंट्स में बिफोर ट्रीटमेंट देखना बहुत जरूरी है. ये पेशेंट इज इन कोमा और उसके ये पैरामीटर्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़े हैं या फिर कुछ कम है, तो हमें इसे भी देखना चाहिए. इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें अगर कुछ और कम ज़्यादा होता है तो और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं. इसलिए ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी होते हैं बिफोर ट्रीटमेंट. Then perform brain scans to observe any abnormal brain functioning using either CT or MRI, and continuous to monitor brain waves and identify seizures. If patient having the seizures, coma with convulsions, then हमें कन्वर्जेंस पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जेंस ऐसे होते हैं, इट मे बी सोरिक साइकोटिक सिफिलिटी. तो इफ यू आर ट्रीटिंग द कोमा एंड उसे ये सीजर्स पहले नहीं थे, कन्वर्जेंस नहीं थे, लेकिन आफ्टर मेडिसिन पेशेंट को कन्वर्जेंस स्टार्ट हुए, तो इट इज राइट और रॉन्ग. तो ये चीज भी मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीजर्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आनी चाहिए तो क्यों, और नहीं आनी चाहिए तो क्यों नहीं आनी चाहिए. यस. तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोमा. Then signs and symptoms of coma: inability to voluntarily open the eyes, a non-existent sleep-wake cycle, पेशेंट कभी आंख खोलता है या फिर गोज इनटू डीप कोमा, कभी माइल्डली स्लाइटली कॉन्शियस होगा, देन अगेन गोज इनटू कोमा, दैट इज द डीप स्लीप. इसलिए हमें ये भी ध्यान देखना है. देन लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू फिजिकल, दैट इज पेनफुल और वर्बल स्टिमुलाई, कंप्लीट नो रिस्पॉन्स है, माइल्ड रिस्पॉन्स है, स्लाइट रिस्पॉन्स है. देन डिप्रेस्ड ब्रेन स्टिम रिफ्लेक्सेस such as pupils not responding to light, irregular breathing, scores between 3 to 8 on the Glasgow coma state. Yes, so this is severe condition. Coma is developed as a response to injury or defense. Defense mechanism to save minimum function of life, which part of brain is affected in coma. Again, the important thing for to find out the conflict. कोमा में पेशेंट है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, कौन से पार्ट में इंजरी हुई है, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड बॉडी का कौन सा पार्ट
अफेक्ट होने वाला है या फिर अफेक्ट हुआ है, इसके लिए हमें एमआरआई सीटी स्कैन देखना जरूरी है. देन injury to a small region in the pontine tegmentum is significantly associated with coma. This is the main part, pontine tegmentum, and other parts like old brain. ओल्ड ब्रेन का क्या फंक्शनिंग होता है? ओल्ड ब्रेन अगर अफेक्ट हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या होगा? सो pons and medulla oblongata controls autonomic functions. So autonomic functions will lost if this part become injured. Then respiration, patient, if this part is affected, is injured, then respiration, patient wants ventilation, or the respiration become Chinese stroke respiration, CVS, then vasomotor centers, reflex centers, etc. Then if the midbrain is injured, then emotional brain, thalamus, hypothalamus, hippocampus, and amygdala. So what is amygdala? Amygdala is a small part of your brain, but it has a big job. It's a major processing center for emotions. Major processing center for emotions. It also links your emotions to many other brain abilities, especially memories, learning, and your senses. Yes. तो बहुत बार हमने ये भी देखा है कि पेशेंट जैसे कॉन्शियस होता है, तो जब पेशेंट को कोई मिलने आता है तो पेशेंट वाज कंटिन्यूसली क्राइंग, टेयरिंग फ्रॉम आईज कंटिन्यूसली. देन हम बोलते हैं कि पेशेंट को सब कुछ समझ में आ रहा, पेशेंट हर किसी को देख के रो रहा है. दैट मीन्स हिज एमिगडाला इज स्टिमुलेटेड. इट इज अ गुड साइन. यस. You are getting or not? Yes, The sir. pathophysiology of the coma. Yes. Midbrain also controls hunger, satiety, heat, thirst, and emotions. And the last, cerebrum. Cerebrum is conscious brain, cortex and frontal lobe last develops. So cerebellum developed as soon as life started moving on the earth. So these are the parts of the brain that may get injury and cause coma. So the conflict is completely depend on these parts, and these parts जो भी 4-5 पार्ट्स यहाँ दिए हैं उससे कंप्लीट ब्रेन बनेगा. एंड ब्रेन इज रिलेटेड टू, जो हम आगे देखने वाले हैं कि किस कॉन्फ्लिक्ट से, किस पर्सन से रिलेटेड होता है और क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है. फर्स्ट we will see the layer. It is a nervous system, that is the 6th layer, and the miasm, it is always be the syphilitic. Yes. कोई भी कोमा साइकोटिक नहीं हो सकता, ना ही सोरिक हो सकता है, बिकॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज अ syphilitic. The complete breakdown in the yes, बोलिए. Contact with the world, completely break down. So this is the syphilitic condition. तो यहां तक आई थिंक समझ में आया या फिर बोर हो रहा है? सर हिस्टोरिकल भी सिफिलिटिक होगा?
यस, हिस्टेरिकल सिफिलिटिक नहीं हुआ, बट इट इज साइकोसिफिलिटिक, क्योंकि वो कोमेटोस कंडीशन होती ही नहीं है। दैट इज हिस्टीरिया ओनली, सुडो है। किसी तभी चीज को अवॉइड करने के लिए या फिर एग्जैगरेट करने के लिए वो कंडीशन पेशेंट लाता है। यस। Yes, sir. Now the conflict of coma. The conflict of coma is related to the somebody senior or a head person or the head of family. Mainly it affected by domination or influenced by or discord between elders. Yes. So these parts of brain affected because of this. So इससे रिलेटेड हमें पेशेंट से हिस्ट्री लेना है, पेशेंट की हिस्ट्री निकालना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट फॉर कोमा है। नाउ द अप्रोच इन कोमेटोस पेशेंट्स। तो डॉक्टर हैनीमन इन एफोरिज्म 153 ही टोल्स कि किस तरह से इन केसेस को ट्रीट करना है, किस तरह से इन केसेस में एनालिसिस करना है, हमें क्या देखना है, क्या लेना है और क्या कंसिडर करना है। सो इन दिस सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, that is to say, in this comparison of the collective symptoms of the natural disease with the list of symptoms of known medicines in order to find among these an artificial morbidic agent corresponding by similarity to the disease to be cured. The more striking, listen carefully, the more striking, singular, uncommon, and peculiar characteristics, signs, and symptoms of the case of disease, it is also given in 109, are chiefly and most solely to be kept in view. For it is more particularly these that very similar ones in the list of symptoms of the selected medicine must correspond to in order to constitute it most suitable for effecting the cure. The more general and undefined symptoms, more general and undefined symptoms, loss of appetite, headache, debility, restless sleep, discomfort, and so forth demand but little attention mean that vague and definite character if they cannot be more so accurately described as symptoms of such a general nature are observed in almost every disease and from almost every drug. The conclusion of this 153 miasm is that take the more striking, singular, uncommon, and peculiar characteristics, signs, and symptoms. So, where has the patient lost his defense in the syphilitic state? ये मेन उसका कंक्लूजन है, संदर्भ है इस 153 एफोरिज्म का। तो इन कोमेटोस पेशेंट, हमें हिस्ट्री तो पेशेंट नहीं बताएगा, जो रिलेटिव से हिस्ट्री मिलेंगी, जो उसका जो भी अटेंडेंट है उससे हिस्ट्री मिलेगी और वो फॉल्स भी हो सकती हैं। दैट्स वाई डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि जो आपको स्ट्राइकिंग लग रहा है, सिंगुलर है, अनकॉमन है, peculiar characteristics, signs and symptoms from his body on the base of your observation, you can take it. तो ये जो PQRS symptoms उन्होंने बताया,
These are one or two only जो आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही हमें पिकअप करने होते हैं. यस, तो इन केसेस में ये ऐसे परफेक्टली हम नहीं बोल सकते कि यही रूब्रिक आएगा, यही रूब्रिक आएंगे, ये लिस्ट है रूब्रिक की, इसमें से सिलेक्ट करो. नो, वो रूब्रिक कुछ भी हो सकते हैं. पैथोलॉजिकल हो सकता है, उसका फिजिकल जनरल रूब्रिक हो सकता है, या फिर मेंटल रूब्रिक हो सकता है. दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर. So again, he writes in 154, if the antitype constructed from the list of symptoms of the most suitable medicine contains those peculiar, uncommon, singular and distinguishing characteristic symptoms. तो हमने रूब्रिक ले लिए जो हमें बहुत ही स्ट्राइकिंग रेयर रूब्रिक दिखे, जो जिस पॉइंट पे उसका बॉडी का डिफेंस फेल हुआ, उस पॉइंट पे जो उसकी रिएक्शन थी, जो उसकी डिस्पोजिशन थी, उससे हमें जो रूब्रिक मिला, उस रूब्रिक से जो मेडिसिन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मेडिसिन आल्सो बी द peculiar, uncommon, singular, distinguishing symptoms which are to be met with in the disease to be cured in the greatest number and in the greatest similarity. That remedy, yes, is definitely similar to this state of disease or the condition of the patient. This medicine is the most appropriate homeopathic specific remedy for this morbid state. और हमारा यहाँ एक ही एम होता है कि पेशेंट को इस कंडीशन से बाहर निकालना है, इस डेंजर ऑफ लाइफ से बाहर निकालना है. यस, so if it be not one of very long standing, will generally be removed and extinguished by the first dose of it. And ये जो कहा है डॉक्टर हैनेमन ने, यस इट इज, मतलब इतना परफेक्ट है कि अगर आपकी रेमेडी सिमिलिमम है, परफेक्ट सिमिलिमम है, तो ओनली वन डोज से ही पेशेंट में कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी. यस, तो यहां तक किस किस को समझा कोमा में किस तरह से हमें देखना है, कोमा का एनालिसिस, कोमा में जो अप्रोच हमें यूज करना है, तो इस तरह से. तो इसमें अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, तो पूछ सकते हैं. Yes, you can ask before we go ahead. Yes, Dr. Patel. हाँ सर, एक बहुत साल पहले मेरे पास एक कोमा का पेशेंट था. वो लेडी थी, उसको ब्रेन ट्यूमर विथ कैल्सिफिकेशन विथ नेक्रोसिस ये डायग्नोसिस था. हेलो. Yes, बोलिए बोलिए. हाँ, और लेफ्ट साइडेड था उसको, नहीं सॉरी राइट साइडेड था. तो वो पेशेंट कोमा में थी, मैंने राइल्स ट्यूब वगैरह सब डाला था. उनके ब्रदर आए थे मेरे पास, तो मैंने हिस्ट्री पूछी थी, तो बोले इसको बच्चे नहीं थे, सेकंड हस्बैंड है इसका, और बहुत डोमिनेटिंग है, ऐसा वैसा. तो मैंने नाइट्रोम्यूर दिया था सर. उसके बाद वो पेशेंट अच्छी हुई, चलते फिरते क्लिनिक पे आती थी, सबको लगा चमत्कार है, और कुछ दिनों के बाद, साल भर बाद उनकी डेथ हो गई. तो मुझे समझ में नहीं आया तब कि ऐसा क्यों हुआ. Yes. तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वहां पे डेवलप हुआ था सर, क्योंकि नारियल इतना ट्यूमर. नो, उसमें ये हो सकता है कि दैट ब्रेन ट्यूमर वाज ओनली साइकोटिक. तो साइकोटिक एंड द नेट्रोमोर में भी द पार्शियल सिमिलियम, इसलिए उसको कोमा से बाहर किया. उसके बाद दैट ट्यूमर बिकम मैलिग्नेंट एंड आफ्टरवर्ड वो प्रोग्रेस हुआ उसका, देन he died.
अच्छा। यस, तो ये उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो मेडिसिन सिलेक्शन हुआ ऑन द बेस ऑफ साइकोसिस हुआ और बाद में केस सिफिलिटिक में गई एंड स्पॉइल्ड हो गई। यस, ओके सर, पर वही पहले ही वो कोमा में थी तो वो सिफिलिस में नहीं थी क्या, इसका मतलब? सिफिलिस नारियल का में थी ट्यूमर। लेकिन बिकॉज ऑफ साइकोटिक, बिकॉज हाँ। ऑफ ट्यूमर, तो हो सकता है कि तब वो ट्यूमर ओनली एक पार्ट में था, उसके बाद उसमें प्रोग्रेस हुआ। पहले वो कोमा से बाहर आई, थोड़ा पार्शियल से रिलीफ हुआ, दैट इज पैलिएशन आल्सो। उसके बाद द ट्यूमर ग्रोज एंड उसने सेंट्रल एक्सिस क्रॉस किया, नाउ इट बिकम अ सिफिलिटिस। ये ओके। ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में ये देखना चाहिए एक्चुअली एमआरआई करके, ये सब करके कि क्या सिचुएशन है। यस सर। तो लेकिन ऐसे में लेकिन अपन जीसीसी देते हैं। लेकिन सर कहते हैं कि इन केसेस में, ट्यूमर केसेस में एमआरआई भी नहीं करना चाहिए, राइट? तो उससे भी वहां पे एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन सेल्स को मिलता है और वो मतलब एकदम स्पीडली ग्रो होता है आफ्टर द एमआरआई, क्योंकि यस। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ही हाई होता है, हाई रेजोल्यूशन होता है। दैट्स व्हाई सेल गेट्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन। बट ये कौन सी केसेस में नहीं करना चाहिए? हर केस में आप एमआरआई कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो ये उन्हीं केसेस में नहीं करना चाहिए जो पेशेंट बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उन केसेस में ही आप इन एमआरआई सीटी स्कैन को अवॉइड करो। अदरवाइज पेशेंट इज नॉट सेंसिटिव, his remedy is not sensitive, then you can do it. Yes. यस, थैंक यू। ओके, तो आगे चले। यस। तो एपोरिज्म 153 समझ में आया, एपोरिज्म 154 समझ में आपके? सो द रूब्रिक कोमा केसेस में क्या लेना है, कैसे लेना है, ये डिपेंड करता है इन दो एपोरिज्म पे। नाउ द पॉसिबल होम्योपैथिक रेमेडीज, तो एक लिमिटेड ग्रुप मेडिसिन का आता है इसमें, जैसे कि आर्निका। आर्निका वन्यम, if you prescribe repeatedly every hourly till conscious comes, but in which cases? In cases of trauma due to physical or mental. Vanyam repeatedly apply on the skin जब तक पेशेंट कोमा से बाहर नहीं आता। If patient becomes conscious, partial conscious, then you can stop it and wait and watch. Naxomica, it is trauma due to biochemistry. Yes, it is very good remedy for trauma due to biochemistry, और ये biochemistry को trauma होता है because of excess high power medicines, modern medicines. And sepia. Sepia is the best remedy for trauma due to homeopathic medicines. Yes. So, जो भी पेशेंट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रिपीटेशन और द रॉन्ग पार्शियल सिमिलियम रेमेडीज की वजह से पेशेंट डल हुआ, कोमा में गया, तो उन केसेस में सेपिया इज द बेस्ट रेमेडी जो पेशेंट को कोमा से बाहर करती है। So these three remedies
are the important remedies for coma patient, then these medicines we can use in acute coma only. Yes, so जो acute coma होते हैं, मैग्नीशियम इन भी केसेस में हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं. Then in chronic cases, in chronic case of coma, only GCS can help, which covers the sensitivity of the patient. तो जहां पे भी हम GCS देते हैं तो हमें पेशेंट का सोरा मैच करना होता है. दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट. सो इन chronic coma or chronic comatose condition, you must have to prescribe GCS. Yes. So कल हम और भी बहुत से रेमेडीज है वो हम कल इसमें देखेंगे कि किस तरह से मेडिसिन सिलेक्शन करना है, कौन से बेसिस पे करना है, क्या पोटेंसी होगी, क्या रिपीटेशन होगा. यस, ओके. सो आज हम यही स्टॉप करते हैं, कल इसके आगे देखेंगे. ओके, सो नाउ 10 मिनट बचे. नाउ यू कैन आस्क द क्वेरीज. सर मैग्नीशियम भी आएगी क्या? यस, मैग्नीशियम. यस यस, मैग्नीशियम भी आती है. तो मैग्नीशियम की क्या कंडीशन होगी एक्यूट में? इन विच केस यूज जो मैग्नीशियम? जो पेशेंट का ब्रेन डेड हुआ या फिर अभी कोई उम्मीद ही नहीं बची कि 90% पेशेंट इज डाइड, ऐसे कंडीशंस में मैग्नीशियम्स यूज करने चाहिए जो पेशेंट को वहां से खींच के लाता है, मतलब यम के चाल से. तो ऐसे कंडीशंस में मैग्नीशियम्स आर द बेस्ट रेमेडीज. यस. और हेलो सर. हेलो सर. हाँ, सर जीसीएस का क्या रोल है इसमें फिर एक्यूट केसेस में? जैसे कोमा से निकल गया बाहर, बाद में सर जीसीएस देना जरूरी है या व्हाट टू डू? जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. पेशेंट कोमा के बाहर आया, एक फुल्ली कॉन्शियस हुआ, देन उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जीसीएस देने का वहां कोई रोल होता नहीं है. लेकिन पेशेंट को अगर कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रशांत खाटव ने बताया कि पेशेंट वाज इन कोमा ड्यू टू द ब्रेन ट्यूमर, तो ऐसे कंडीशन में जीसीएस देना चाहिए क्योंकि पेशेंट कोमा से बाहर हुआ. दैट वाज partial remedy, partial simillimum, and also we can say it is a state simillimum. So इससे पेशेंट बाहर आए तो ऐसे इसमें जीसीएस देना मस्ट है क्योंकि जो रेमेडी आपने दिया दैट इज द स्टेट सिमिलिमम. तो ऐसे पैथोलॉजी में आपको जीसीएस देना है. लेकिन पेशेंट अगर हेड इंजरी का पेशेंट है, ब्रेन हिमोरेज का पेशेंट है और उसकी इंजरी कंप्लीटली क्योर हो गई, हिमोरेज क्योर हो गया, कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो गया, वहां पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ था ब्रेन वॉल्यूम में वो कंप्लीटली क्योर हो गया, देन ऐसे कंडीशन में कोई रोल ही नहीं बचता जीसीएस देने का. If he have some other problems, then you can give the GCS. Yes. ओके, थैंक यू सर. सर हाइपरटेंशन की वजह से जो कोमा में जाते हैं उसको कैसे हैंडल करना है? हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट कोमा में जाएगा, एक तो वहां ब्रेन हिमोरेज होगा या फिर अदर कोई जैसे एम्बोला या फिर जो भी कुछ इस्केमिया ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं.
इसमें भी वही रोल है कि पहले सबसे पहले आप पेशेंट को कोमा से बाहर करो, वहाँ स्टेट से मिनिमम एक्यूट रेमेडी इस तरह से आप देके पेशेंट को पहले डेंजर से बाहर करो, देन यू कैन गिव द जीसीएस। फिर उससे आपको उस हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है ताकि पेशेंट फिर ऐसी कंडीशन में ना जाए। हिमोरोज के वजह से गया हो तो सर? हाइपरटेंशन। स्टेट से मिनिमम। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। सर जी, एक बार आपने जो बताया था, अपने कोमा में एक केस थी, फिर आपसे डिस्कस हुआ, आपने फिर बताया कैंपर दिया था उसको, शायद कैंपर दिया था 1 m, फिर वो कोमा से निकल गई और मेरे एक आधी महीना अच्छी रही, 1-1.5 महीना। उसके आफ्टर 1 month या 2 month के बाद में फिर वो जैसे कि वैसी हो गई, कोमा में नहीं थी लेकिन उसकी फिर डेथ हो गई। वो किस वजह से हुई होंगी? पहले वो निकल गई, वो आपने ही बताया था, फिर अच्छा, तो कैंपर 1 m दिया था उसको, कैंपर। तो उसके बाद में 2 महीने के बाद में अच्छी होने के बाद में फिर वो उसकी डेथ हो गई। उसको बाद में फिर अपने जीसीएस देने को होना था, क्या क्या प्रॉब्लम कब क्या बोला है? था मैंने ये केस? कोविड के पहले जीसीएस नहीं, आपने स्ट्रेट यानी वो उसका वीडियो आपको भेजा था, फिर आपने बताया था कि 1 m में दिया था उसको कैंपर। अच्छा, तुम्हारी केस थी क्या? हाँ हाँ, उसका। तो कैंपर से पेशेंट कोमा से बाहर आई, हाँ जी जी। फिर उसे जीसीएस देना चाहिए था ना। हाँ, अच्छा, वो पूरी बाहर आई थी। अच्छा क्योंकि वहां कोई कुछ तभी पैथोलॉजी थी, वो पैथोलॉजी ट्रीट करना जरूरी है, इसीलिए बाद में अच्छा जीसीएस देना जरूरी है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर जी। फिर जिसमें कोमा, अभी आपने बोला कि उसके बाद में अपन ने जीसीएस देने को होना, लेकिन कितने दिन तक वेट करेंगे उसके बाद में हम जीसीएस देंगे? जैसे कोमा से तो अभी पेशेंट बाहर आ गए, वो तो जैसे हमको तुरंत तुरंत कोमा से तुरंत। बाहर आने के बाद आपको वर्कआउट करना है, पूरी हिस्ट्री लेना है, उसका जीसीएस निकालना है ना। वो जीसीएस निकालने के लिए ही वो कोमा से बाहर आई, अच्छा, है ना, ताकि आप उसकी हिस्ट्री पूछ सके। ओके ओके सर, सिंपल लॉजिक लगाना। अच्छा सर जी, थैंक यू सर जी। Yes. Okay? Okay, sir. Yes. So thank you very much. थैंक यू सर। Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank See you, sir. you. Thank you, sir. Thank you.